चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर एयर शो हो रहा है। Skill of the aircrew. I'm sure you'll agree with me in saying that Chinook is not just a helicopter, it's a symbol of strength, versatility and precision. And now it's finally time to wave the Chinooks goodbye, as you can see the mighty Chinook leaving behind the trails of its bear. सतपुड़ा की घाटियों से विंध्य की गुफाओं तक, नर्मदा से सिंचता विहंगम प्रदेश हूँ। भारत का दिल हूँ मैं मध्य प्रदेश हूँ। मालवों के साहस से बघेलों की यान तक, निमाड़ियों की वीरता से बुंदेलों की शान तक, रग रग में दौड़ता शौर्य का संदेश हूँ। भारत का दिल हूँ मैं मध्य प्रदेश हूँ। कमलापति की आन हूँ, चंद्रशेखर का बलिदान हूँ, इतिहास के पन्नों में जड़ा समर्पण का बखान हूँ, राष्ट्र पर मिटने का देता संदेश हूँ। भारत का दिल हूँ मैं मध्य प्रदेश हूँ। परंपरा में लीन हूँ, विकास में प्रवीण हूँ, किसान का सम्मान में विज्ञान का संदेश हूँ। भारत का दिल हूँ मैं मध्य प्रदेश हूँ। विकास पर आरूढ़ मैं भविष्य का आह्वान हूँ, सुनहले भविष्य को संजोता चक्षु अनिमेष हूँ। महाकाल की कृपा हूँ मैं, विजयासन का अनुदेश हूँ। भारत का दिल हूँ मैं मध्य प्रदेश हूँ। भारतीय वायुसेना के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम मध्य प्रदेश के आकाश में अपना प्रदर्शन करेंगे। Air power has been pivotal in playing a critical role in leveraging India's national interests and making India the net security provider in the region. In line with this, the theme for this year's Air Force Day is Indian Air Force Air Power Beyond Boundaries. And the Indian Air Force invites the local populace to witness the scintillating showcase of aerial display coming soon. अब हम आपको भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य की पृष्ठभूमि से अवगत कराएंगे। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और भगवान का यह विराट रूप आकाश तक व्याप्त है। इसी से प्रेरणा लेकर भारतीय वायुसेना भारत के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The Indian Air Force over the years has transformed into a modern airspace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the Indian Air Force has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism.
The Indian Air Force's roles can be described as deterrence, protection, projection, and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal, Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan, respectively. आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि अब हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल का आगमन हो चुका है। हम वीर हैं आकाश के, हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले, धरती नभ अंतरिक्ष या हृदय को जीतना, जय हम करते गए, हम जिधर जिधर चले। सीमाओं के अधीन हो या कि उसके पार हो, विमानों की हुंकार से और अचूक वार से शत्रुओं को ध्वस्त पस्त विजय समर कर चले। शौर्य बन के लहू है रगों में दौड़ता, भाव कर्म प्राण सब बलिदान अपना कर चले। हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। महामहिम राज्यपाल अब दर्शक दीर्घा में पधार चुके हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की ओर से हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं उनका हमारे बीच आगमन पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। On behalf of Chief of the Air Staff Air Chief Marshal V.R. Chaudhary and all personnel of the Indian Air Force, we extend a very warm welcome to the Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangu Bhai Patel, for gracing this occasion by his esteemed presence. We also are grateful to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, for sparing his valuable time to be with us. देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि हम अगला प्रदर्शन आरंभ करें, हम प्रदर्शन स्थल एवं उड़ान परिस्थितियों से आपको परिचित कराते हैं। हम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर रुख करके सौंदर्यमयी भोजताल झील के किनारे बैठे हुए हैं। अब हम आपको भोजताल के आसपास के थल चिन्ह या लैंडमार्क्स के अनुसार वायुयानों एवं फॉर्मेशंस के उड़ने की दिशा से अवगत कराएंगे। अब अपनी नजरों को बोट क्लब के बाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर ले जाएं, जहां पर वन विहार को आप देख सकते हैं।
हमारी अधिकतर फॉर्मेशंस इसी दिशा से आएंगी। अब अपनी नजरों को उत्तर दिशा में मनुआ भान टेकरी पर स्थित जैन मंदिर पर केंद्रित करें। हमारे कुछ विमान मंदिर के दाहिनी ओर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब अपनी नजरों को राजा भोज की प्रतिमा की ओर ले जाएं। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान हमारे विमान इस ओर से आगे बढ़ेंगे। अब अपनी नजरों को पूर्वी दिशा में ले जाएं, जहां राजा भोज सेतु है। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान आप तेजस को इसी दिशा से आते हुए देखेंगे। Ladies and gentlemen, before we commence the proceedings of the air display, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated on the banks of the beautiful Bhojtal Lake while facing in northwesterly direction. We would be now orienting you with the landmarks around the lake and shall be announcing the approach of the flying formations with reference to these landmarks. Towards your west, that is on your left, is Van Vihar, the forest jutting onto the lake. And as we scan the horizon from left to right, you can see the hillock famously known as Manua Bhan Tekri with the Jain temple located right on top of it. Further, moving towards your right, you can see the statue of Raja Bhoj, and on your extreme right is the famous Raja Bhoj Setu. The skies are clear to partly cloudy and visibility is in excess of 6 kilometers, which is a perfect weather for a display of this kind. Today's flypast is an outcome of focused training and professionalism of the air and ground crew. The coordination required to line up over 50 aircraft for a flypast, all taking off from different bases over the country, is incredible. The timelines are absolute and the margin of error negligible. So sit tight and wait for our pilots and the machines to put on the most incredible air show you shall ever witness. Ladies and gentlemen, please look towards your left over the horizon over Van Vihar. Approaching the lake is Dhwaj formation of 4 Chetak helicopters, trooping the national flag of India and the Indian Air Force ensign, the symbolic opening formation that traditionally sets the tone for the show to commence. आपके बाईं ओर से 4 चेतक हेलीकॉप्टर की ध्वज फॉर्मेशन आ रही है। राष्ट्रीय ध्वज एवं भारतीय वायुसेना के ध्वज को लेकर गर्व से आगे बढ़ती यह फॉर्मेशन आज भोपाल के आसमान में एक नई गौरव गाथा लिख रही है। The Dhwaj formation, comprising 4 Chetak helicopters of 141 HU known as the Flamingos in inverted wineglass formation, being led by Group Captain S. Sai Kiran as Dhwaj 1, who is trooping the national flag, and Wing Commander Gagan Sikri as Dhwaj 2, carrying the Indian Air Force ensign. देवियों और सज्जनों, अब आप अपनी बाईं ओर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। आसमान में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है किरण मार्क 2 की फॉर्मेशन। मानो लग रहा है आज भोपाल के आकाश में भारतीय ध्वज के तीनों रंगों से रंग जाने के लिए तैयार बैठा हो। राष्ट्र प्रेम का एक अनुपम दृश्य। Next, approaching on the horizon towards Van Vihar shall be the Rudra formation, comprising the pride of India. Indigenously developed advanced light helicopter Mark III in a WIC formation. The formation is flown by Wing Commander Jamkar and Squadron Leader Samant, with Wing Commander Vishal and Flight Lieutenant Iqbal on the right, and Squadron Leader Dubey and Squadron Leader Reha on the left of 111 HU, also known as the Snow Tigers. दर्शकों, अब आप अपनी बाईं ओर से रुद्र फॉर्मेशन को आता हुआ देख रहे हैं, जिसमें सम्मिलित हैं भारत का गर्व, भारत में ही विकसित किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है,
वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Coming in next is a 3-aircraft Vic formation, Prithvi, led by the majestic transport aircraft C-130J Super Hercules. The captain of the aircraft is Wing Commander Sangram Singh of 87 Squadron. Captain flying in the left AN-32 is Wing Commander Karamjeet Singh, and on the right AN-32 is Wing Commander P.K. Pandey from 12 Squadron. Both these aircraft form an integral part of the tactical and strategic airlift capabilities of the Indian Air Force. Coming in from your left over One Vihar, the Prithvi formation. दर्शकों, अब आपके सामने आ रही है पृथ्वी फॉर्मेशन, जिसमें अग्रणी है विशालकाय परिवहन वायुयान जिसका नाम है C-130J सुपर हर्क्यूलिस। उसके दोनों ओर हैं AN-32। Flying in next, in a while, from your left shall be the Gajraj formation with one IL-78 along with two Mirage 2000s in refueling role. The formation displays the capability to conduct air-to-air refueling that is intensively skill-based and has been honed by leading air forces over decades. The maturing of this capability in the Indian Air Force is a remarkably short period is testimony to the professionalism and commitment of our aircrew. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sunda and Wing Commander S.K. Singh as a navigator from 78th Squadron known as the Mars. And the Mirage 2000s are being led by Squadron Leader B.A. Suhas and Wing Commander A. Gholve from 7th Squadron, the Battle Axis. आपकी बाईं ओर से अब आगे बढ़ रही है गजराज फॉर्मेशन। हवा में ही ईंधन भरने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए ये विमान आपको अपनी संक्रिय क्षमताओं से परिचित करा रहे हैं, जिसके बल पर हमारे फाइटर्स बिना लैंड किए दूर दराज के देशों में सीधे उड़ान भर सकते हैं। Here you can see them just short of connecting to the refueling aircraft to take fuel in the air. Next in sequence are the Sukhoi 30 MKI and our very own indigenous marvel, the Tejas, shall be flying in Badal formation depicting fighter-to-fighter refueling. The formation shall depict the Tejas in pre-contact position during the process of taking the fuel from the Brick Brothers Su-30 MKI. आप अपने नेत्रों को फिर से वन विहार के ऊपर की ओर क्षितिज पर ले जाएं। वहां पर एक फाइटर से दूसरे फाइटर में ईंधन भरने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए आगे बढ़ रही है बादल फॉर्मेशन। Ladies and gentlemen, look towards One Vihar. Wing Commander Jagdale and Flight Lieutenant Bajwa from 24th Squadron known as the Hawks flying the MKI and Wing Commander Patnaik from 18th Squadron known as the Flying Bullets is the captain of the Tejas. Flying in next are 5 Jaguars, one of the most formidable strike aircraft of the Indian Air Force, in arrowhead formation named Shamsher. The formation would be streaming fuel
while flying in front of you. The formation is being led by Group Captain M. Garg from 27th Squadron. अब आपके सामने आ रही है 5 जैगवार एयरक्राफ्ट की शमशेर फॉर्मेशन। जैगवार विमान मुख्यतः एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो सीमाओं के पार शत्रुओं के ठिकानों को तबाह करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जिस हिमगिरी को रहे घमंड, उसका चूर अहंकार करे। वर्षा आंधी आतप अखंड, ना कर सके जिसको विखंड। तो तालियों से स्वागत कीजिए शमशेर फॉर्मेशन का। Like thunder, approaching from your left, you will now see our very own 5 light combat aircraft Tejas in arrowhead formation in the sky. अब अपने नाम को सार्थक करता भारत का गौरव तेजस 5 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन में आपकी ओर बढ़ रहा है। अपनी दृष्टि को केंद्रित करें वन विहार के ऊपर के क्षितिज पर। तेजस वजन में हल्का अवश्य है, किंतु बात जब मातृभूमि की रक्षा की आती है तो इसकी घातक शक्ति अतुलनीय है। तालियों से स्वागत कीजिए भारत के गौरव तेजस फॉर्मेशन का। The formation is being led by Group Captain M. Surendran from 45 Squadron, the Flying Daggers. Ladies and gentlemen, the most awaited formation of Bharat is going to be unleashed in front of you, wherein we have the indigenously developed light combat aircraft as Bharat 1 and the super majestic fighter Su-30 MKI as Bharat 2. We proudly present to you the major success story of the Indian aerospace industry, the protector of the Indian skies, the light combat aircraft Tejas. After decades of research and development by countless numbers of exceptional individuals, the Tejas was finally inducted in the Indian Air Force in 2016, with the first unit, the 45 Squadron, formed at Bangalore. Ladies and gentlemen, brace yourself for the first maneuver by the Bharat 1, the hesitation roll. Here it goes. 1, 2, 3, and it pulls up into the lovely skies of Bhopal. This maneuver is carried out to shoot down the adversary by exploiting the vertical plane. Watch as the pilot prepares to carry out a max rate turn in front of you. The pilot now spots an adversary and starts turning like a beast. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red-eye turn. In this, the pilot is pushed to the other end of the envelope where the aircraft is subjected to negative 3.5 G. Watch as he carries out an inverted outside turn right in front of you. Here it goes. And with the inverted turn, the Tejas slowly exits the arena.
Ladies and gentlemen, look towards One Vihar, Su-30 MKI as Bharat 2 flown by Group Captain P.K. Thakur and Flight Lieutenant Anaadi enters the arena demonstrating a high-speed run. And there she comes right in front of us at speeds over 900 km per hour. Don't be fooled by the noiseless dash as thunder always follows the Sukhoi. The pilot is now carrying out a max rate turn. Ladies and gentlemen, the pilot will now execute the maneuver called the loop tumble yaw. And as she reaches the top of the loop, notice that she is inverted. And here she is inverted on top of the loop at this stage. Instead of the nose coming down, you see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault, followed by a flat yaw turn, and before your very eyes, the aircraft says goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology in the aircraft. The pilot is now positioning to carry out rolls to the right. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the mighty flanker shall effortlessly carry out multiple rolls. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. He is now carrying out a teardrop turn for a low-speed run from your left to the right. What distinguishes the supersonic aircraft from others is the ability to fly at low speeds as well. And this is precisely what the MKI will demonstrate to you as she flies past at just 250 km per hour. Notice the high angle of attack. As they say, even the wind stops to stare. You will now see that from a speed of 250 km per hour, the mighty flanker accelerates in no time. The pilot is now positioning for a minimum radius turn. And right in front of you, he will carry out a minimum radius turn. Notice the very small radius of turn of the flanker as he turns right in front of you. A nightmare for the enemy and ensures that it always comes out as the winner. Demonstrating the maneuverability of the aircraft, look again, there she goes and exits the arena. Ladies and gentlemen, keep looking ahead as the Tejas will once again be entering the arena. And here the Tejas is pulling up in a loop showing off its majestic delta platform. Continue looking out. The aircraft now comes down for a very tight offensive turn, displaying its superior aerodynamic design and capabilities.
and would be turning tight on a track. Watch it as it effortlessly turns in a radius of just a few hundred meters, which looks unbelievable for a fighter plane. The pilot now reverses and would be positioning the aircraft for the final two maneuvers. The fourth generation fighter, this mean machine, is one of the lightest in the world. Light it may be, but it surely packs a heavy punch when it comes to protecting its motherland. Featuring the state-of-the-art fly-by-wire systems and avionics, this machine flies like a dream, but hunts like a tiger in battle. Now the Tejas would manifest an inverted flight right in front of you. Coming in from the right, the Tejas. Ladies and gentlemen, get ready to behold the sight. And the final maneuver will be the majestic vertical Charlie as the Teja pulls up and bids goodbye to the lovely audience of Bhopal. Ladies and gentlemen, please look towards One Vihar as Su-30 as Bharat 2 makes the final grand entry. Ever seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on as the pilot will now execute a remarkable maneuver called the tail slide. And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail in anticipation of the approaching festive season. The Su-30 heralds it with fireworks in the skies of Bhopal. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. And now, as the name suggests, she slides forward and downwards. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of its jet engines. And having seen the MKI perform some breathtaking maneuvers, it is time for the grand finale. The next maneuver is going to be the vertical Charlie, also known as the victory roll, in which the aircraft will pull up in steep vertical attitude and rolls rapidly into the vertical to touch the sky with glory. And here the MKI is approaching towards us from the front for a vertical Charlie. Focus your attention to the front, and here he pulls up into the vertical, carrying out rolls and lights up the sky once again. That, ladies and gentlemen, was the mighty Sukhoi 30 MKI, demonstrating its superior agility. This is the only operational combat aircraft in the Indian Air Force with thrust vectoring and truly the very best. We hope this aerobatic display gave you some idea about the maneuvers the aircraft is capable of performing. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the Bharat formation. जाएं, जहां 3 सुखोई 30 MKI की त्रिशूल फॉर्मेशन आसमान का सीना चीरती हुई आपकी ओर तीव्र गति से बढ़ रही है। क्या आप त्रिशूल फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जहां मध्य में है ग्रुप कैप्टन प्रशांत और फ्लाइट लेफ्टिनेंट धानी, उनके बाईं ओर हैं विंग कमांडर दीपक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मणि, एवं उनके दाहिनी ओर हैं स्क्वाड्रन लीडर सतत एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंकज। तीव्र गति से आपकी ओर बढ़ रही है त्रिशूल। भोपाल के संस्थापक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य के सम्मान में त्रिशूल को नभ में उत्कृत करते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन।
जय हिंद, सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों। तो भोपाल वालों, कखा पठान, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? अभी आप सबने देखा आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI। और बस अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में इस झील की सुंदरता में 4 चांद लगाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के 4 हेलीकॉप्टर। And we promise you that this display will become a part of your most cherished memories.